On behalf of Sri Siddhivinayak Temple of USA, Indian Cultural and Community Center, we welcome a man who needs no introduction, Sri Dhoni. Jiva is not here today, and Sri Sudesh Kumar Mahato, ex-Deputy Chief. He's the youngest Home Minister and the youngest Deputy Chief Minister of Jharkhand, young and dynamic. His wife Neha, Sejal and Shoya are not here today. So we are blessed to have them here. It's like a dream come true for us. We started, although I said that he doesn't need any introduction, but I have to say that he is the only Indian captain who led India to T20 World Cup, 50 over ODI World Cup, and also took us to India to #1 in test ranking. When I came from a small town, Ranchi, to America in 1986, they used to ask me, where are you from? I used to say, Ranchi. Where is it? Now when I say I'm from Ranchi, they say, oh, so that's where Dhoni is from. So thank you, Mr. Dhoni, for putting Ranchi on the world map. Community. And a community without a temple is like a house without light. We had to go hour and a half north or hour and a half south to visit a temple. And our moms, they didn't have that much time because every mother is a working mother here. And our children were missing out on learning the Indian culture and Indian values. So in 2012, we started a group of devotees took this sankalp to build a temple in the name of Sri Siddhivinayak and also a cultural center. We grew and today we are 34 trustees. And because of visit of Dhoni ji and Sudesh ji, I mean, all the trustees have got invigorated. Just like he put this vigor and energy in the Indian team, we are also energized by his visit. At this time, I would like to thank them again for being here, and a special thanks to Sudesh ji for bringing our Mahi to our temple. I also want to thank all of you who are here. There are 34 trustees who have put in their money, hard-earned money, to build this temple, and over 700 devotees who have contributed to building this temple. Please put your hands together as they are presenting a memento to our very own Mr. Dhoni. Thank you. धन्यवाद। सिद्धिविनायक टेम्पल यूएसए के भवन के उद्घाटन समारोह में सबसे पहले मैं अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर अविनाश जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उनके साथ उनको सपोर्ट करने वाले डॉक्टर गीता मेहता जी को भी हम सपोर्ट करते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम अभिनंदन करते हैं अपने देश के गौरव भारतीय टीम के कप्तान आदरणीय
महेंद्र सिंह धोनी जी का, साक्षी जी का, नेहा जी का। हमारे पीछे दो गेस्ट हमारे साथ में हैं, उन दोनों जो हमारे साथ हैं, हम लोग साथ रहते हैं। एक वेलकम जिन्होंने माही जी का अमेरिका में किया, और उनके पीछे बगल में वो भी इंडियन क्रिकेट से जुड़े हुए हैं हमारे मित्र, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हम चाहेंगे सब मिलकर उनका भी स्वागत करते हैं। मैं अपने ट्रस्टी ये 34 परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आए हुए सभी भारतीय सोच, भारतीय संस्कृति, भारतीयता को अमेरिका में प्रबुद्ध रूप से स्थापित करने की तैयारी करने वाली पूरी टीम को मैं अपनी ओर से अभिनंदन करते हैं। अपने मीडिया टीम को भी हम अभिनंदन करते हैं। ये याद है आप सब परिवार के लिए, उतना हमारे लिए भी। क्योंकि भारत में खड़ा होकर कभी भी इस रूप से नहीं सोचा जा सकता है कि वहां पे बसने वाले जो लोग सेटल हैं, जिन लोगों ने कामयाबी पाली है, वो भी कहीं ना कहीं भारतीयता का, भारत की प्रभुता को अमेरिका में भी उसी रूप से स्थापित करना चाहते हैं। वो सोच अभी भी यहाँ बरकरार है। ये भारत के लिए, भारत के नौजवानों के लिए एग्जाम्पल है। आपने उदाहरण पेश किया, इसलिए आपके प्रति आभार। हम आते हैं भारत के एक छोटे जगह से, झारखंड, एक नया स्टेट, रांची, उसका राजधानी। अभी कहा डॉक्टर साहब ने, रांची जब वो आए थे 96-97 में, तो उनसे कहा गया था कि आपका परिचय इधर से, किस गांव से, तो उनको परिचय देना पड़ता था। भाई वो पटना से रांची या कोलकाता के नजदीक, दिल्ली से इतना दूर, ये बताना पड़ता था। वर्ल्ड मैप में उन्होंने बताया कि आज माही जी से अब परिचय का मोहताज नहीं है। पूरा भारत के लोग जो भारत में बसते हैं, उसके बाहर भी बसते हैं, वो गर्व करते हैं इन पर, इनके नेतृत्व पर गर्व करते हैं। आप यहाँ पर आके आपने भारतीयों का शान बढ़ाया। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में अभी आपने गूगल पर देखा, पेप्सी में भी, ये तीनों भी जो अभी मेन लीडर हैं वो भी भारतीय हैं। ये भी हमारे लिए गर्व का बात है, ये लीडर भी भारतीय। हम जिक्र इसलिए कर रहे थे कि छोटे जगह से आते हैं, क्योंकि झारखंड बोलने से आप जाएंगे तो झारखंड को लोग जानते हैं कि भाई एक वहाँ कोयला अच्छा है, कोयला मिलता है, हम भारत को सपोर्ट करते हैं। हमारे 40% खान संपदा देश को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन कोयला, लोहा, सभी चीज, सोना, इवन सोना भी है। एक कमी था हीरा का, हमने भारत को हीरा दिया, झारखंड ने आज ये माहौल गणपति जी को समर्पित है, और श्री गणेश करके हर चीज की शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत भी करते हैं जय श्री गणेश, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो आज जो एकता आप में है, आप सभी सुलझे हुए लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, और आप में एक अनुभव है। मेरा रिक्वेस्ट इतने है कि भारत अब तैयार है, भारत बढ़ रहा है, भारत के नौजवान तैयार है, कुछ करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ये एक सिर्फ उदाहरण है, कई उदाहरण और सेटअप जिनका मैंने नाम लिया यहाँ स्थापित। आपके अनुभव को भारत के साथ बांटिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। जिस क्षेत्र में भी है, चाहे वो जिस में काम करते हैं, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, जहाँ भी है, भारत को और आपके अनुभव का जरूरत भारत को है। मैं इस मंच से, गणपति जी के मंच से केवल आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूं, और हम सब मिलके भारत को उसकी ऊंचाई तक ले जाने का, उसकी ताकत का बोध कराने का हम लगातार प्रयास करेंगे। और चाहेंगे डॉक्टर साहब बिल्कुल विलंब न करते हुए, जिनको आप मजे से सुनना चाहते हैं, जिनको खेलते हुए देखा है, बस एक लीडर हर मैदान में सफल हो सकता है, जो क्रिकेट को लीड कर लिया, जिसके ऊपर 130 करोड़ लोगों का, जनता का विश्वास जहां टिकता है, वो व्यक्ति किसी भी मंच को लीड कर सकता है। माही आएंगे, आपको लीड करेंगे। धन्यवाद आपको। I hope, I request them to come, just like when he visits Ranchi, every time he goes to Devdi Mandir, I will request him to, every time he visits USA, he should come to our temple, Sri Siddhivinayak temple at USA.
Please, ladies and gentlemen, Mr. Mahendra Singh Dhoni. Thank you. A very good afternoon to all of you. Thanks for the very warm welcome. To start off, congratulations on having a temple of your own, and congrats to all the members and all of you who have contributed in making this dream a reality. To start off, the two persons before me, they have talked about Ranchi. I think it's very important for me also to speak a few words about Ranchi. And I remember 2004 I made my debut, and the incident I'm talking about is midway 2005, and we were outside India, and one of the persons asked me, okay, where are you from? So I told him Ranchi. Immediately he came and said, Karachi. I like, no, Ranchi. So he just said, okay. So I understood the fact that he doesn't know where it is. So then I started explaining, okay, we come from a state called Jharkhand. It's the richest state in mineral resources. And still the response was, okay, that's good. So finally I had to talk about one of the most known things about Ranchi, that you actually don't want to speak about a lot, and it's a mental hospital. So there's two big mental hospitals in India. One is in Agra and one, of course, is in Ranchi. So that's how it all started. Again today, coming over here, it's a first of a kind for me. Usually whenever I come to the US, I don't do any public events. Usually it's the family time and we stick to doing our own stuff. But I feel it's an honor for me to be here today especially. And the kind of response that all of you have given, it's a real pleasure. I've been to different places. Most of them have been cricket playing nations, whether you talk about England or Australia. So this was one of a kind because this was the first of its kind in the US, and it was an eye-opener. The way you have embraced the culture of US, but at the same time you have stuck to the Indian culture. It's something that's really appreciable, and the fact that a lot of you would have come maybe early 60s or late 70s and even later, but still to be 200% Indian and still acknowledge and respect the traditions of the country that you are in, I feel is something that everybody needs to learn. And at the same time, the way you have taught the coming generation, how they need to adapt to the various aspects of life, I think that's something that I really appreciate. And about the sport that I play, it's not really a sport that's very popular in the US. So often people ask, okay, what do you do? So I'm like, I play cricket. So they're like, okay, what really happens? I'm like, it's very similar to baseball. You have 4 bases, you run diagonally to all the bases. We only have 2, we run in between them. And at times, with the T20 format coming in, I can actually tell them, it's slightly a fast-paced sport compared to the baseball. So other than that, it's very difficult for me to explain, how different cricket is from baseball. But other than that, a real pleasure being here. Thanks to all of you. Hopefully, I'll interact with you a lot more, but I know it will be slightly difficult with the amount of mobile phones and everything that goes around. But if I can bring a smile onto your faces, that's something. I can proudly say, okay, I've done something good in the afternoon today. Other than that, keep supporting us. We have a good side, we have a good team. We are in a phase where, we are going through a lot of changes. But with all due support of yours, we'll keep doing well. So thanks a lot. Real pleasure being here. Let's make the most of the afternoon. Thanks.